Hello everyone. Welcome to Bansal Gurukul. My name is Toshiba Kohli Khare and I am serving Bansal Group of Institutions as a corporate trainer for English. Today I am going to discuss something very important. Interview skills. Everybody must have heard interview skills. So today we are going to discuss about the various interview skills. Now, in today's discussion, what are we going to learn about? क्या-क्या सीखने वाले हैं हम? Obviously, what is the meaning of interview skills and what are the various skills which are required in a candidate to crack the interview? अब पहले बात ये आती है कि हम ये देखें कि interview skills होते क्या हैं? Interview skills are the skills which a candidate should possess to crack an interview. और अगर हम अलग वर्ड्स में उसको बोलें तो ऐसे स्किल्स जो एक कैंडिडेट में रिक्वायर्ड होते हैं कि वो किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाए और वहां पर सिलेक्ट हो जाए, उस इंटरव्यू को क्रैक करे. Those skills are called interview skills. Now, first interview skill which I am going to talk about is research. किस रिसर्च की बात हो रही है यहाँ पर? Obviously, researching the company. जिस भी कंपनी के लिए हम इंटरव्यू के लिए जाएं, सबसे पहला जो स्किल रिक्वायरमेंट होता है वो ये कि प्लीज रिसर्च द कंपनी बिफोर यू अपीयर फॉर दैट इंटरव्यू. रिसर्चिंग द कंपनी, व्हाट डज दैट मीन नाउ? Researching that company means that you should definitely visit the company's website. आजकल कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, हर कंपनी की एक वेबसाइट जरूर होती है जहां पर उसकी सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं. So make sure that you visit that website and make sure that you gather all the necessary details about the company. Details like what is the total number of employees working in that company, or what are the total number of offices across the world. अगर मैं TCS की बात करूं तो TCS के कितने offices हैं all over the world. ये सब जो details होती हैं आपको ज़रूरी रहती है इसके बारे में research करना. Yeah, what was the company's revenue last year? What is the company's revenue this year? Who is the chairman of TCS या Wipro या जिस भी कंपनी के लिए आप appear हो रहे हैं इंटरव्यू के लिए. So, researching the company is the first skill which is very, very important to acquire. अगर आप बिना रिसर्च के चले जाते हैं इंटरव्यू के लिए और वहां पर आपसे कंपनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, if you are asked any question related to the company that okay, tell me what is the total number of employees working today in Wipro or Capgemini or any other company, you should be very well prepared to give the answer to that question. If you are asked, tell me who is the CEO of our company, definitely you should have the answer for that. So for that reason, according to me, the first skill which is extremely important and is required in a candidate is researching the company before you appear for the interview. The next skill is, what are you able to see here? The interview questions. Now, what does this mean? You need to prepare yourself for the most expected interview questions. Now, what are these expected questions? आप किसी भी कंपनी में जब HR इंटरव्यू के लिए जाते हैं, there is a set of 10 to 12 questions जो वही आपसे पूछे जाते हैं, जैसे tell me something about yourself, why do I hire you, or why do you want this job, or what is unique in you, or where do you want to see yourself 5 years from now. So all these are very expected HR questions which you need to prepare beforehand. अगर आप विदाउट प्रिपरेशन सीधे इंटरव्यू में पहुंच जाते हो, यू गिव अ वेरी बैड इंप्रेशन एंड ऑब्वियसली चांसेस ऑफ योर रिजेक्शन गेट इंक्रीज्ड. सो फॉर दैट रीजन आई एम टेलिंग यू, prepare yourself with the most expected interview questions before you appear for the interview. क्या होता है जब अगर हम तैयारी से नहीं जाएं इंटरव्यू में तो वहां जाकर we fumble, isn't it? हम स्टैमर करते हैं, फंबल करते हैं, सोचने में टाइम वेस्ट करते हैं. एक जो नेचुरल फ्लो में आंसर्स आते हैं वो तब आते हैं जब हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं. So for that reason I am telling you, prepare yourself with the most expected questions जो हम ये देख रहे हैं, top 10 interview questions. Tell me about yourself, how would you describe yourself, what makes you unique. ये सारे जो मैंने questions slide पे डाले हैं,
सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपसे किसी भी कंपनी में, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, हर कंपनी में इसी तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. सो make sure that you prepare yourself beforehand with these most expected interview questions, and definitely this is a very much required skill which a candidate should possess before he or she appears for the interview. Let's move on to the next skill, which is again a very important one: resume. Drafting a resume is another important skill which you need to keep in mind before you appear for the interview. Now, I have seen that students still don't know, or the candidates who are going to appear for the interview, they still don't know how to prepare a professional and a proper resume. So make sure you include all the things, as in your achievements, your educational qualification, your soft skills, your technical skills, your certifications, your personal details in that resume, because a resume needs to be very professional and well drafted. And उसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, सिर्फ रेज्यूमे बनाना नहीं, उसे प्रॉपरली रीड करना, उसके साथ थॉरो होना, isn't it? क्योंकि हम कई बार अपने रेज्यूमे को डेकोरेट करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें लिख देते हैं. I have seen some students writing in the resume that my hobby is reading novels, और माई हॉबी इज़ प्लेइंग चेस. सो वहाँ पर हो सकता है इंटरव्यू में आपके रेज्यूमे को देखकर आपसे ये पूछा जाए कि ओके, यू हैव रिटन दैट योर हॉबी इज़ रीडिंग नॉवेल्स, सो प्लीज़ टेल मी विच नॉवल डिड यू रीड लास्ट, क्या थीम थी उस नॉवल की. सो दैट टाइम यू विल बी सिटिंग विदाउट एनी आंसर. सो अपने रेज्यूमे को डेकोरेट करने के लिए कुछ ना लिखें, जिन चीज़ों पे आप बहुत श्योर हों that you will be able to answer about anything whatever I have written. Okay, so that way only you are supposed to write in the resume. Otherwise ऐसा कुछ भी आप उसको डेकोरेट करने के लिए ना लिखें, अगर उस चीज़ पे आप पर क्वेश्चन आ जाए तो आप आंसर ना कर पाएँ. So drafting your resume is of course a very important skill, and knowing your resume as well. Whatever you write down, you should be thoroughly prepared to answer every question on your resume. We move on to the next skill. Now, interview attire, or what I call formal interview attire. I have observed so many students, they still don't know how to dress formally. Okay, whenever you go for an interview, obviously the first impression you give to the interview panel is from your dress up. अगर आपका dress up proper नहीं है, तो how can you expect कि वो आप में इंटरेस्ट लेंगे, या अगर आप बहुत इम्प्रॉपरली और इनफॉर्मली आपको ड्रेसअप देखेंगे आपका, तो किस तरह का इंप्रेशन आपके बारे में लेंगे और कितना इंटरेस्ट दिखाएंगे आप में. सो द फर्स्ट इंप्रेशन यू गिव द इंटरव्यू पैनल इज थ्रू योर ड्रेसअप, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ड्रेस्ड अप फ्रॉम टिप टू टो वेरी प्रोफेशनली एंड वेरी फॉर्मली. आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर जो फॉर्मल इंटरव्यू अटायर है फॉर मेल्स, this is supposed to be light color shirt with a tie, and of course अगर एक blazer और ऊपर हो जाए, formal pants and blazer. So जो blazer है वो और look को enhance कर देता है, आपका एक formal look और enhance हो जाता है उससे. So for males it is this, and for females you can see in this slide, same like collared shirt with a dark color blazer, but of course the color of the shirt should be decent, not very loud. And the females should not put on a very loud makeup. बहुत loud makeup नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा accessories नहीं होने चाहिए. Okay? एक बहुत decent जो गेटअप होता है, फॉर्मल गेटअप जिसे हम बोलते हैं, भले ही मेल हो या फीमेल हो, आपके जो आपके हेयर दैट शुड बी प्रॉपरली ट्रिम्ड. ओके, एंड ऑब्वियसली आपके शूज़ हैं वो प्रॉपरली पॉलिश्ड हो, बिल्कुल नीट आपका गेटअप हो, बहुत फॉर्मल आपका अटायर हो. सो दिस इज समथिंग विच यू रियली नीड टू वर्क ऑन बिफोर यू गो टू द इंटरव्यू. क्योंकि हम जाने की तो पूरी तैयारी कर लेते हैं और बहुत खुश रहते हैं हम कि वी हैव टू गो फॉर द इंटरव्यू, बट वी ऑलवेज नीड टू रिमेंबर दैट द फर्स्ट इंप्रेशन वी आर गोइंग टू गिव इज थ्रू आवर ड्रेसअप. नेक्स्ट आई मूव ऑन to the skill speak clearly. Now, speaking clearly is something which is extremely important. You know what happens? Once we enter the interview room,
we are actually in a hurry because there are so many butterflies in our stomach, we are so nervous. तो हमें ये लगता है कि बस हम जाएं और इंटरव्यू शुरू हो, जल्दी जल्दी हम आंसर करें, इंटरव्यू खत्म हो और हम बाहर चले जाएं, isn't it? So इस कोशिश में it happens that our speech is not very clear. जो हम बोलते हैं या हम जो आंसर्स देते हैं जल्दीबाजी में, हमारा रेट ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वर्ड्स जो है उसी की वजह से अनक्लियर साउंड होना शुरू हो जाते हैं. सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब इंटरव्यू में जाने के लिए आपको 6 दिन 7 दिन का टाइम मिला है कि ओके यू हैव गॉट द इंफॉर्मेशन दैट आफ्टर 8 days और 10 days यू हैव टू फेस द इंटरव्यू. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मिरर के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करें. ओके या आप अपनी फ्रेंड्स के सामने या फैमिली के सामने यू शुड बी स्पीकिंग. और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका रेट ऑफ स्पीच कैसा है. यू शुड आस्क देम फॉर फीडबैक कि मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा था या बोल रही थी, या मेरे जो मुंह से वर्ड्स निकल रहे हैं वो क्लियर हो रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. दोज वर्ड्स विच कम आउट ऑफ योर माउथ इन द इंटरव्यू शुड बी क्लियर एंड ऑडिबल, इजंट इट? बहुत लैविश वर्ड्स आप यूज ना करें, सिंपल वर्ड्स यूज करें अपने आंसर्स में. बस आपको क्लियरली बोलना है, इस चीज का ध्यान रखें. विथ ऑब्वियसली अ मॉडरेट रेट ऑफ स्पीच, ना बहुत फास्ट हो और ना बहुत स्लो हो, ताकि आपके वर्ड्स जो हैं वो इंटरव्यू पैनल को स्ट्रगल ना करना पड़े आपके वर्ड्स को समझने के लिए. नेक्स्ट आई मूव ऑन टू द इंटरव्यू स्किल स्माइल. नाउ you must be thinking that why smiling is important. Of course it is very important. क्योंकि जब हम वहाँ पर जाकर इंटरव्यू पैनल के सामने नर्वस एक्सप्रेशंस और ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ बैठ जाते हैं, सो इट गिव्स अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यूअर, बिकॉज ऑब्वियसली दे एक्सपेक्ट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर साइड. ओके, उन्हें ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप किसी मजबूरी में उठकर इंटरव्यू देने आए हैं या आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट टाइप के इंसान हैं जो बस एक कंपनी में एंट्री के लिए इंटरव्यू देना जरूरी है, आप इसलिए वहां पहुंच गए. सो डोंट गिव दैट काइंड ऑफ फील टू द इंटरव्यूअर. Make sure, I'm not saying that you should go on laughing, but yes, at regular intervals आपको थोड़ा थोड़ा सा स्माइल, जहाँ पे पॉज लिया है या कहीं आपने आंसर खत्म किया है, कहीं वो आपको अप्रिशिएट करें दैट ओके गुड, वहाँ पर एट इंटरवल्स यू शुड मेक श्योर टू स्माइल. द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट स्किल विच इज रिक्वायर्ड, नाउ व्हाट यू कैन सी, कैन यू मेक इट आउट? Yes, eye contact. Is it necessary? Of course it is. Because eye contact is something which is very much required to create a positive impression on the interviewer or the interview panel. Just imagine, right now you can see that I am looking towards you, isn't it? If I am speaking something and I start looking towards the walls or towards the ceiling or towards the sofas, so will that speech be effective? Will you take interest in listening to me? No. Isn't it? So whenever we are speaking to someone, isn't it, in a video call or even in a one-to-one interview, in a personal interview I mean, definitely eye contact is very, very important to create a positive impact on the interview panel. आपका जो एक आई कॉन्टैक्ट होता है उनके साथ, दैट गिव्स एन इम्प्रेशन दैट यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी and you are very much happy to come for the interview. So make sure that you maintain a proper eye contact with the interview panel. The next skill I would like to move on. Very important. What am I talking about? Body language in an interview. Because you know what? Students have a general mindset that if we give good answers, then that is enough. हमें job मिल जाएगी और हम easily interview को crack कर लेंगे. But let me tell you, 60% आपके आंसर्स और 40% आपकी बॉडी लैंग्वेज रिस्पॉन्सिबल होती है कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए. बॉडी लैंग्वेज मीन्स द वे यू वॉक इन द इंटरव्यू रूम, किस तरह से आप वॉक करके इंटरव्यू पैनल की तरफ जा रहे हैं, किस तरह से आप बैठ रहे हैं वहाँ पर. सम ऑफ द स्टूडेंट्स गेट सो नर्वस कि वो बिल्कुल ही उनके शोल्डर्स डाउन हो जाते हैं, isn't it? या वो जो चेयर में बैठते हैं, they slouch in the chair, बहुत पीछे होकर इस तरह से बैठ जाते हैं टिककर. So these are the things which you need to avoid. Your shoulders should be straight, your position should be erect, बिल्कुल सीधे आपको बैठना है. ओके, और हाथों से बोलते से जब आप आंसर्स दे रहे हैं तो हाथों से आपको मूवमेंट इस तरह की नहीं करनी है. इसे हम बोलते हैं फिजिटिंग.
So you play with your hands. In nervousness, आप notice करना, whenever you are too nervous and you start speaking, you start playing with your hands this way. This is called fidgeting. So you should avoid fidgeting, slouching, जो इस तरह के movements होते हैं आपके body के, you should avoid them in the interview. So before going to the interview, make sure कि आपको पता हो एक proper body language कैसी होनी चाहिए इंटरव्यू में, और आप उसी को फॉलो करें जब आप दरवाजे से अंदर घुसकर और इंटरव्यू पैनल की तरफ जाएं. व्हेन यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स द इंटरव्यू पैनल, जहां वहां पर लोग बैठे हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए, जिस तरह से आप उनके सामने जा रहे हैं, बैठ रहे हैं और आंसर्स दे रहे हैं, किस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज है, दैट एक्चुअली मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यू पैनल. शायद आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ हमारे आंसर्स जो हैं बहुत सॉलिड हैं तो दैट विल वी विल विन द गेम, बट ऐसा नहीं होता. बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होनी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है. So make sure that you maintain a very proper body language during the interview. The next interview skill which I would like to mention, stay positive. No, not corona positive, interview positive. मतलब क्या होता है, अंदर जाकर हम इतने नर्वस हो जाते हैं कि कुछ 3-4 क्वेश्चंस भी अगर हमने गलत जवाब दिया तो हमें एक नेगेटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, isn't it? Because we feel that okay, now the interview panel must be taking a very negative impression about us क्योंकि हम 2 से 3 क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए. But what I would like to suggest you, even if आपने 2 से 3 क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया और आप सॉरी बोलकर आगे बढ़ गए, या आपने बोला कि सर प्लीज गिव मी अनदर क्वेश्चन बिकॉज आई वोंट बी एबल टू आंसर दिस वन, और आई डोंट हैव अ गुड आंसर फॉर दिस वन. सो बी मोटिवेटेड थ्रू आउट द इंटरव्यू. डोंट थिंक दैट द इंटरव्यूअर वो आपके बारे में क्या सोच रहा होगा, या आप वही सोचकर आपके चेहरे पे एक नर्वसनेस आ जाए और डीमोटिवेट हो जाए. डोंट गेट डीमोटिवेटेड. Right from the beginning till the end, you need to stay positive in the interview. This is again a very important skill because मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि स्टूडेंट्स बस 2 से 3 अगर क्वेश्चंस में अटक जाते हैं तो वो बहुत डीमोटिवेटेड दिखने लगते हैं. एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं उनके, यही सोच के कि हम आंसर नहीं दे पाए. बट you need to stay motivated throughout your interview so that the interview panel जब आप उठे वहाँ से तो एक पॉजिटिव उनके दिमाग पर एक इंप्रेशन हो आपका कि ठीक है 10 क्वेश्चन पूछे, 2 से 3 अगर आंसर नहीं भी दिए तो 7 to 8 का जो हमें जवाब मिला, दैट वाज वेरी गुड, वेरी सैटिस्फाइंग, एंड द बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशंस आर वेरी पॉजिटिव. ही और शी इज अ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी एंड डेफिनेटली हमें इनको ले लेना चाहिए. सो स्टे पॉजिटिव throughout the interview. This is something which you really need to remember because it's a very important interview skill. Now the next one which I would like to come on, ask the right questions. What happens when you are done with the interview? At the end, the interview panel or the interviewer who is sitting, he or she would ask you that, okay, do you have some questions for me? So you need to remember or you need to be prepared कि हमें अगर इस तरह से पूछा जाता है कि do you have something to ask me, पहली बात, never give that reply no. कभी भी ये ना बोले कि नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना आपसे. Always be prepared with 1 or 2 sensible questions, good questions to ask at the end. Definitely जब वो आपसे पूछें कि do you have any questions for me. So this is a skill which is very important that you need to be prepared with the right questions beforehand. आप इंटरव्यू में जाने के बाद नहीं, जाने से पहले सोच लें कि अगर मुझ पे ये आखिरी में क्वेश्चन आता है कि do you have any question for me, तो मुझे क्या पूछना चाहिए. It can be based on anything. आप पूछ सकते हैं कि sir, which are the technologies on which you are working, या if I get hired in your company, which technologies will I need to work on. इस तरह के sensible और job से related questions you have to ask at the end if you are questioned on do you have any questions for me. So remember to prepare those questions beforehand. So these were the interview skills, and the last but not the least, don't forget to thank the interviewer before you leave the room. We are so nervous that we are in a hurry कि जल्दी से इंटरव्यू हो जाए और हम बाहर चले जाएं. But make sure that when the interview panel has devoted its time to you, और आपका इंटरव्यू लेने के लिए उनने आपको टाइम दिया, आपको एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप आएँ और अपना इंटरव्यू दें,
you also have the responsibility to thank the interview panel before you leave the interview room. So make sure to thank them before you leave the interview. So my dear friends, these were the main points which I wanted to tell you. These were the main interview skills which a candidate should possess before going to the interview, and so that the chances of rejection are minimum and chances of selection are the highest. Thank you so much.